These little clay vessels might be the oldest disposable cups in the world. Evidence of their use in the Indian subcontinent goes back 5,000 years. That's the end of the Stone Age. Traditionally, they're meant to be sipped from and tossed out. The cups are called kulhads or kulhars or ba or shikora, depending on who you ask. Whatever you call them, the convenient cups have nearly always been the preferred vessel for tea shops throughout the region. Enter single-use plastic and paper. Today, more and more tea shops are giving up their traditional kulhad in favor of alternatives, which means less income for kulhad craftsmen. काम करके भी हम लोग का पेट ठीक से नहीं भरने पाता, परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं हो सकता. Cheaper prices make plastic and paper appealing to businesses that can end up going through thousands of cups a day. But proponents of the kulhad say that plastic is bad for your health, bad for the environment, and bad for business. The reality is a bit more nuanced than that. Is the simple kulhad really better than a plastic cup? And how long will it stick around? We went to Calcutta, India to see how traditional clay teacups still stand despite the rise of paper and plastic. Jayaprakash Prajapati's workday lasts longer than the sun's. From 4 a.m. to 10 p.m., he and his family make about 2,500 kulhads each day. हम लोग का ड्यूटी 17 से 18 घंटा पड़ जाता है. He estimates he's made over 10 million cups since he started 25 years ago. अरबों लोगों ने आपके चाय से पिए होंगे, इससे आपके चाय पिए. उससे और अधिक भी हो सकते हैं. Their design is deceptively simple. Unpainted, handleless vessels for drinking tea. केवल प्लेन का प्लेन ही देते हैं, एकदम शुद्ध देते हैं. It's a design that's been perfected over thousands of years by generations of craftsmen in India. कि हम लोग शुरू से ही हम लोग के बाप दादा करते आए हैं, हम लोग भाड़ बनाते आए हैं और अभी तक हम लोग बना रहे हैं. It's hard, relentless work. बहुत गर्म है. यहाँ से अभी कम पकड़ा जा रहा है. After unloading the previous day's batch from the oven, workers prepare the clay for today's array of kulhads. सबसे ज़्यादा मेहनत पहले इसमें तो है मिट्टी बनाना. They use a wire and their feet to slice and mix the clay, evening out its consistency and making it easier to work with. This clay, fresh from the ground, is the only ingredient in Jayaprakash's kulhads. And it gets more expensive year after year. मिट्टी का अभी रेट तो फिलहाल बहुत हो गया है, पहले तो कम ही था, अभी 10 से 11 हज़ार रुपया गाड़ी आता है. He has no choice but to purchase from local sellers at whatever price the Potters Union sets. The cost of importing clay would eat into what little profit he already makes, and he can't use just any soil. इस मिट्टी में लहसुन है, तो सब मिट्टी में बालू मिट्टी है, उसमें लहसुन नहीं है. Before it's ready to shape into kulhads, bits of stone and grass need to be removed from the clay. Pebbles could cause the cups to explode in the oven, and grass could burn away and leave holes. Traditionally, it's men who make kulhads, but everyone in Jayaprakash's household works to keep up with demand. घर का जो काम है थोड़ा लेडीज़ लोग जो हैं, हम लोग का अपना खाना पीना बनाने के बाद समय बचता है तो अपना वो भी कर लेते हैं. थोड़ा बहुत हाथ बटा देते, थोड़ा हम लोग को भी राहत मिल जाता है. The tea shops he supplies expect deliveries daily. हम लोग का चाय की दुकान में कोई दुकान है 1000, 1500, 2000 भी भाड़ लग जाता है. At its current size, Jayaprakash's workshop can only manage to produce around 2,500 cups a day. This makes it difficult to create any sort of backstock, meaning the workshop has to be in perpetual production mode. यानी पहले तो बड़ा बाजार के अंदर में इतना माने कुल्हड़ लगता था कि हम लोग देने नहीं सकते थे. जब से ये कागज़ का प्लास्टिक कप निकला है तब से बहुत नॉर्मली हो गया है.
The air-dried kulhads are laid out in a series of tight concentric circles and fired overnight. सावधानी जितने नहीं सावधानी रखेंगे तब तो बचेगा, नहीं तो सब टूट जाएगा। This formation efficiently bakes up to 10,000 kulhads at a time. But right now, it's monsoon season, which means even after a night in the oven, the kulhads might not be dry. काम लो हो जाता है, लॉस होता है, क्योंकि माल ठीक से सूखता नहीं है। मैंने सुबह का माल बनाया जो सूखता नहीं है, और शाम का भी माल जो बनाया होता है वो भी भट्टी में ठीक से नहीं सूखता। Setbacks like this make it even harder for Jaya Prakash to keep up with the already overwhelming demand. पानी में न पानी माटी का भार कैसे सुखाएगा? जब आता नहीं तब हम देखो कागज के काम में चाह देता है। Paper and plastic cups are cheaper and more convenient than kulhads, making them an appealing alternative to tea shops operating on razor-thin margins. Vendors like Kashinath Kole buy cups from Jaya Prakash for about half a rupee apiece. He can get paper cups for close to a fifth of a rupee apiece. इसमें 6 रुपया देते हैं और ये जो कागज के कप 5 रुपया। Despite the markup, most of the 100 to 150 cups of tea he sells each day come in kulhads. भान में चाय पीने से इधर बहुत आदमी बोलता बहुत अच्छा, और भान नहीं रहेगा उसे चाय पीने से मज़ा नहीं आता है। Kulhad proponents are adamant that tea sipped from clay tastes better. वो भान में चाय डाले देखो, वो तो माटी का भान ना थोड़ा से टान लेता है। वो मिट्टी का भी रहता है और जो आग में जलाता है तो। With plastic, it's more than flavor that seeps into your tea. Numerous studies have shown that hot liquids in plastic cups, as well as paper cups coated with plastic, can leach microplastics and a chemical called bisphenol A from the container. Even in fine amounts, bisphenol A, or BPA, has been linked to cancer, reproductive issues, problems with brain development, and many other diseases and dysfunctions. Research on microplastics is limited, but they're associated with a similar laundry list of potential issues. There's no evidence that drinking from a kulhad has any negative effect on a person's health. But what about making a kulhad? कमर टूट जाती होगी भैया पूरे समय झुके कमर टूट हुए। जाता है, बहुत मेहनत होता है। ज़्यादा उम्र तक नहीं होना सकती। आपके पापा कितनी एज में रिटायर हो गए? पापा हमारे 40 से 45 साल में रिटायर हो गए, 40 साल में ही हो। आपकी उम्र कितनी भी है? हमारी उम्र अभी 36-37 साल है। इसमें ज़्यादातर करके सांस का माने बीमारी होते हैं। धुएं में क्योंकि काम बस वही थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होता है। The kulhad might not be as eco-friendly as it's chalked up to be either. Kulhad proponents claim that because the cups are made from earth, they are easily biodegradable. But there haven't been any formal studies about this. Adding moisture to air-dried clay easily dissolves it. But fired clay is chemically changed into a more durable material. The reason we even know kulhads have been used for 5,000 years is that modern archaeologists were able to find surviving examples of them. Some craftsmen will bake their kulhads at lower temperatures to make the final product more easily disposable. But most kulhads aren't composted or handled in any specific way. When he's done drinking, Sumit's kulhad will go into the trash. जो महिला झाड़ू रास्ता झाड़ू लगाता है ना, वो आवार उठा के वो कहाँ पर फेंक देता है। Despite the immense challenges, Jaya Prakash is determined to keep making kulhads. He hopes to make more profit in order to improve conditions and hire new craftsmen. अच्छा माने प्रगति जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जितना आगे जा रहा है उतना कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि जितना खटनी है इसमें मेहनत है उस हिसाब से पैसा नहीं है, इसीलिए और नए बच्चे हम लोग के यहाँ पे। Kulhad prices are set by a union,
so Jayaprakash has no control over them. And if prices get too high, tea shops might turn away from them completely. सरकार यदि मदद करता तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होती। सरकार हम लोग के लिए कुछ भी नहीं करने में असमर्थ नहीं करने पा रही है। The Indian government has made efforts to support Kulhad craftsmen in the past. Like in 2020, when the Railways Minister announced that all of India's trains and 7,000 stations would serve tea exclusively in Kulhads. The initiative started with only 400 stations. More joined over the years, but progress appears to have stalled. Despite initiatives like these, Kulhad craftsmen are dwindling. नहीं, उनकी तादाद दिन पर दिन कमी हो रही है। बहुत से लोग छोड़ दिए हैं क्योंकि इसमें माने जो सब वगैरह चीज़ के दाम हो गए हैं ना, अभी लोग को पोसाई नहीं देता। Jayaprakash says he doesn't feel like he's competing with other craftsmen. केवल हम लोग को कंपटीशन प्लास्टिक से ही है। Plastic has already taken out a previous arm of his business. प्लास्टिक का जो पार्टी निकला है, सब अभी सब उसी में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग का वो सब मार्केट चला गया। माने हम लोग इसी के भरोसे थे, लेकिन अभी हम लोग को समझ लिए बहुत तकलीफ होता है। काम करके भी हम लोग का पेट ठीक से नहीं भरने पाता, परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं हो सकता। His family has relied on this workshop for almost 100 years, but its future is uncertain. लेकिन जैसा लगता है कि भाई जब तक उनका माने हिम्मत या माने बल पौरुष चलेगा तब तक तो करेंगे ही। जब नहीं करने लायक रहेंगे तो भाई छोड़ देंगे, फिर नहीं।